Good morning to all. So today we are going to discuss about the anther and discuss about the microsporogenesis. In the last class, we are going to discuss about the anther in detail and discuss about its the diagram actually. So this is a diagram which will indicate this is a anther, this is a anther chamber, and this is the connective, and this is filament. This this is present in a flower. So I draw the flower structure so it can betterly understand where the anther is present actually. This is a flower and bisexual flower. I am drawing the bisexual, drawing the diagram of the flower structure within which we found the different components are present. Means the anther is present, the stigma, style, and ovary. This is the female part, and this is the male part. This the anther part is the male part. So we are going to discuss about all in detail about the anther structure today. So and today we are going to discuss about microsporogenesis. Microsporogenesis means the formation of anther, right? So this is the process in which each microspore mother cell divide meiotically to form four microspore cells. So each microspore mother cell means these are the pollen grain which are present within the anther. These pollen grain to be divided. So each pollen grain is going to be divided. Suppose this is a pollen grain, it is going to be divided to produce, right? So look at here. So I'm drawing the, this is a pollen grain which is present within the anther chamber. Now this pollen grain is going to be divided two successive division from here, one successive division to produce two pollen grain or two pollen gametes, and these two pollen grain again successively divide to produce four pollen grain. So this is a process. This is the process actually within which we are going to discuss the microsporogenesis. So in microsporogenesis, we are going to discuss that in microsporogenesis, each pollen grain is going to be divided to produce whole pollen grain. Microsporogenesis. Microsporogenesis means one pollen grain or microspore is going to divide to produce four microspore. Means one pollen grain is going to divide or one microspore. This is a process actually. This is a process in which we are discussed that one microspore is going to divide to produce four microspore. So this is all about the microsporogenesis. Within microsporogenesis, I draw the diagram here that within the anther chamber, this is a anther. This is anther, which it is a big picture of the anther structure. Here, this is actual flower. If you observe this flower contain the male as well as female part. This is the male part. This anther filament connective containing part is male part, and the stigma style ovary it is the female part. So the male part contain, the anther part contain the pollen grain, means the anther containing, this is actually anther, it is the filament. The stick like structure which is attached to the anther is called as filament, and the joining point is called as connective. So this anther contain the pollen grain, and this pollen grain is going to be divided by successive two division to produce four microspore. So this is the process within which we discuss the microsporogenesis is takes place. Means microsporogenesis means production of four haploid microspore. Four haploid microspore. This is the n number of microspore. N number containing gametes or microspore, whatever you can say. Chip type means the microspore is going to divide by two ways. Means one is successive type, another is simultaneous type. I draw the diagram here. Now I'm representing all the detail. So this is suppose a microspore, and this microspore is divided in two ways. One is successive type, successive type, and another is simultaneous type. Simultaneous type. The successive, I'll draw the diagram and show you in the later. So in successive type, there is two division is takes place. There is two division is takes place.
first and second. This is meiosis 1 and meiosis 2. And then each one going to divide to produce 4 haploid gametes. And I show you the detail. Just wait. I'm drawing the diagram in my copy. In simultaneous step, cytokinesis takes place. Repeated nuclear division takes place, but there is no cell division. Cell division takes place at the end of the nuclear division. So we can get 4 haploid gametes at the end of the cytokinesis. So look at here the diagram. I'm drawing the pollen grain division. This is a pollen grain actually. This is a pollen grain. This pollen grain is divided, means we are going to discuss about microsporogenesis. So microsporogenesis means it is the division of pollen grain or microspore. Pollen grain or microspore. So this is a microspore, or you can say pollen grain. Whatever. Microspore or pollen grain. This microspore is divided by 2 processes. One is successive type, another is simultaneous type. One is successive type, another is simultaneous type. So in successive type of nuclear division, what happened? The pollen grain containing only one nuclei at first initially. This nuclei is going to divide to produce two nuclei. After that, there is cell wall formation it takes place at the middle, but these two nuclei present in two different chamber of the two different cells, but still they are joining to each other from a common wall. After that, a second division takes place. So these each nuclei of the two chamber of the cell are going to divide, each nuclei divide to produce 2, again 2, each one produce 2, means this nuclei divide, suppose I'm drawing here, so this single nuclei divide to produce 2 nuclei, this one divide to produce 2. So there is 4 haploid gametes, or 4 haploid gamete cell are produced, right? So this is called successive type of cell division, and another is simultaneous type. So in simultaneous type of cell division, in simultaneous female part रे अछि स्टिग्मा स्टाइल ओभारी अछि आ मेल पार्ट रे अछि एटी एंथर अछि आ ता तळको जो सुतार गमते बाहरी के सेड को जोडी की एंथर को लागि सेटा होछि फिलामेंट कोन सेई जिनसटा एटी जूम करके एठी एई साइड रे एठी हमर एटी देखैछि एटा कोइटा देखो गोटे एंथर स्ट्रक्चर, काना हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढिबा ना, तो एटा गोटे एंथर स्ट्रक्चर. सो ए एंथर स्ट्रक्चर को देखो बोलसे मुझे पेन माचे एटा गोटे एंथर चेंबर टे, एटा होछि एंथर चेंबर टा. ए चेंबर रे पोलन ग्रेन माने रहिछन, कोन रहिछन पोलन ग्रेन रहिछन. पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहंती बा माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन कहंती ताको हला. तो सेई एंथर स्ट्रक्चर देखिबा जदी एंथर टा काहा का को नै गठित ना, गोटे एंथर चेंबर, एटा होछि एंथर चेंबर जोतरे कि पोलन ग्रेन रहे. आ ए जो गोटे काठी रो एटा जो देखुचो एटा होछि फिलामेंट कहंती, आ ता जॉइनिंग पॉइंट टा को कनेक्टिव कहंती. एंथर कहंती, एंथर रो भीतर पोलन ग्रेन अछि ताको माइक्रोस्पोर कहंती. एंथर चेंबर को भीतर जो अछि सेड को पोलन ग्रेन कहंती बा माइक्रोस्पोर कहंती. तार जॉइनिंग पॉइंट टा को एंथर आ फिलामेंट, ए जो स्टिक टा बाहर जे देखुचो एटा होछि फिलामेंट कहंती, मो ता जॉइनिंग पॉइंट टा को कनेक्टिव कहंती. ठीक. तो एति के हला परे बर्तन देखो एटा एंथर स्ट्रक्चर जानि गला. हम एबे डिस्कस करि जे तारो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ 4 haploid gametes और माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, चारिटा haploid पोलन ग्रेन सृष्टि हो. ए जो पोलन ग्रेन गुडी को अछि प्रथम जो देखा होछि से मनकर रिपीटेड डिवीजन हो माने से माइक्रोस्पोर टा को देखियो केमते डिवीजन होछि. तो एटी देखो मोरे ड्रा करिछि. तो एटा होछि देखो एटा जो होछि एटा गोटे होछि माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन. एटा कहूछि माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन. ए माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन यारो दीर्घ डिवीजन में बा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बा पोलन ग्रेन रो डिवीजन दा दी प्रकार होय. गोटे होछि बाय सक्सेसिव टाइप, गोटे होछि साइमल्टेनियस टाइप. दीर्घ पोलन ग्रेन रो डिवीजन होय बा माइक्रोस्पोर डिवीजन होय बा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होय.
कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो पढ़िबा सेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए सिंगल पोलन ग्रेन गोटे पोलन ग्रेन सिंगल पोलन ग्रेन अछि तार सक्सेसिव यार जो सक्सेसिव डिवीजन हो केते दुई रकम मेथड रहबो गोटे होछु प्रथमटे ऊपर अछि सक्सेसिव टाइप आ तळे अछि साइमल्टेनियस टाइप सक्सेसिव साइमल्टेनियस तो सक्सेसिव टाइप रे देखिबा सक्सेसिव टाइप रे देखिबा जे गोटे सिंगल पोलन ग्रेन ता तार डिवीजन हला पर दीटा पोलन ग्रेन सृष्टि माने पोलन न्यूक्लियाई हला से पोलन ग्रेन तो गोटे किंतु ता भीतर जो न्यूक्लियाई थिला सिंगल न्यूक्लियाई रु डबल न्यूक्लियाई हला डबल न्यूक्लियाई हला पर से माने दीटा सेपरेट हे दी साइड को ताको भीतर गोटे कॉमन पार्टीशन वॉल फॉर्मेशन हे गला तापर सेटा हे गला दीटा सेल हे गला से बर्तन स्टिल किंतु तांकर गोटे कॉमन वॉल द्वारा से जोड़ी के अछंती पुनी ईच न्यूक्लियाई प्रत्येक न्यूक्लियाई गुडी को पुनी डिवीजन हो ये डिवीजन भी हो ये भी न्यूक्लियाई डिवीजन हो प्रत्येक न्यूक्लियाई दी थरे नेखा डिवीजन हला तन को थरे डिवीजन हला को दीटा हेतला न्यूक्लियाई बर्तन ईच न्यूक्लियाई प्रथमे थरे थरे हे गले तन को सामने प्रोडक्शन करियो केटा चारटा ये न्यूक्लियाई थरे डिवीजन हे दीटा करियो ए न्यूक्लियाई डिवीजन करी दीटा करियो टोटल हे जबे चारटा तो ए प्रकार जदी डिवीजन हला पोलन ग्रेन रो न्यूक्लियाई जदी ए भली भाबरे डिवीजन हे कि चारटा हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन हले एटा को कोन कहले हमें सक्सेसिव टाइप ताको कोन कहले हमें सक्सेसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बा सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन तापर आसिला साइमल्टेनियस टाइप एटा अछि देखो साइमल्टेनियस टाइप तो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन से पोलन ग्रेन आ गुटे मेथड रे हुए ता कहबा साइमल्टेनियस सेतले कोन हबो ना थरे डिवीजन हला पर सक्सेसिव डिवीजन हला पर थरे गुटे पोलन न्यूक्लियाई थरे डिवीजन हे कि दीटा न्यूक्लियाई हला पर सेल वॉल फॉर्मेशन बा पार्टीशन वॉल कॉमन किछि फॉर्मेशन होने एटी केवल दीटा न्यूक्लियाई रहै पुनी से दीटा न्यूक्लियाई पुनी ईच वन डिवीजन हे कि पुनी केटा न्यूक्लियाई होछि चारटा न्यूक्लियाई होछि ताने गुटे सेल बा गुटे चेंबर भितर हम कहबा चारटा न्यूक्लियाई हे साला पड़े 4 न्यूक्लियाई स्टेज हला परे तापर देखि तांकर साइटोकाइनेसिस बा सेल वॉल फॉर्मेशन आरंभ होइते जे एटा ए प्रकार हेलेरा को कहबा हमें साइमल्टेनियस टाइप बुझी होछि तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे प्रोडक्शन हुए चारिटा हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होछि सेटा को मेथड रे होछि ना सक्सेसिव टाइप रे होबो बा साइमल्टेनियस टाइप रे होबो सक्सेसिव टाइप रे जदी हला सेटा को प्रथमे तार न्यूक्लियर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हे साला परे तार कोन होछि न वॉल फॉर्मेशन हे जाउछि कॉमन वॉल फॉर्मेशन हेउछि तापर पुनी इज न्यूक्लियाई डिवीजन हे कि चारटा गैमेट तैयारी करछन किंतु साइमल्टेनियस टाइप रे केवल थरे डिवीजन हला परे पुनी आउथर डिवीजन हला परे माने दुईटा सक्सेसिव डिवीजन हला परे तापर सेल वॉल फॉर्मेशन होछि तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोर